Okay, good morning everyone. I am your EVS teacher, and today we shall be beginning our class. I think this is your first class. Achha, so first, before I begin with the class, I will discuss the pattern of the question paper. Achha, now, as far as the question papers pattern is concerned, your ENVS exam will be of 50 marks. Your ENVS exam will be of 50 marks. 40 marks will be your external examination, and 10 marks will be your internal examination. 40 marks external and 10 marks internal. Now, what you need to remember is the 10 marks internal examination that will be conducted by the college, and that you will come to know when the examination will be held. But as far as the external examination is concerned, which will be consisting of 40 marks, now you must know the pattern. Now the examination duration of that external examination will be of 2 hours. The examination duration will be of 2 hours, and there will be 4 sections. Now in section 1, the first section, you need to answer any 5 questions. You need to answer any 5 questions, all 1 mark questions. You need to answer any 5 questions, all 1 mark questions. There will be choice, obviously. In section 2, again you will be requiring to answer any 5 questions. Again you will be provided with a choice. In section 3, there will be long answer questions of 5 marks. There you will be requiring to answer any 3. And in the last section, these are essay type questions, and you will be provided with 3 questions, out of which you will be needed to answer any 1. Okay? So that is your more or less pattern. So section 1, you will be answering 5 questions of 1 mark each. Section 2, or the second section, you will be answering 5 questions of 2 marks each. The third section, you will be answering 3 questions of 5 marks each. And in the last section, section D, you will be answering only 1 question of 10 marks. In every section there will be choices. Achha. Now, as far as the syllabus is concerned, I will be providing you with the syllabus. Don't worry, I will be providing you with the university syllabus. And regarding what books you want to purchase, now those who are studying in the English version, you can purchase the book of Anubha Kaushik and CP Kaushik. I am typing the name. Those who are studying in the English version, you can purchase the book of Anubha Kaushik. I am writing down the name of the book, so please note it down. Anubha Kaushik and CP Kaushik. The name of the book is Perspectives in Environmental Studies. The name of the book also I am writing down. Please note it down. Perspectives in Environmental Studies. Okay? So this is the name of the book along with the name of the author. Okay. Now this is the book you can purchase. And those who are studying in Hindi version, I am not aware of the books. I don't know what books are available in the market, but definitely I will be providing you with some notes. In Hindi. Don't worry. Even for the English version students and for the Bengali version students also, I will be providing with the notes after we proceed with a few classes. Achha. Now, regarding the question paper, now your question paper will be in English and Bengali. There will be no questions in Hindi, but obviously you can write your answers in Hindi. Questions English में और Bengali में रहेगा, हिंदी में questions नहीं रहेगा, but तुम लोग अगर चाहो तो हिंदी में आंसर्स लिख सकते हो, particularly हिंदी सिर्फ स्टूडेंट्स.
पर्टिकुलरली हिंदी सिर्फ स्टूडेंट्स, तुम लोग हिंदी में आंसर्स लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चंस इंग्लिश और बंगाली में ही रहेगा। अच्छा, नाउ एज फार एज योर syllabus is concerned, which I will be sending it to the group, don't worry. There are about 8 chapters. And whatever I teach in the class, concentrate on that only. ठीक है, जो भी मैं क्लास में पढ़ाऊँगा उसी का ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, ज़्यादा पढ़ने का दरकार नहीं है। आई विल बी गिविंग यू सजेशंस, आई विल बी गिविंग यू विथ क्वेश्चंस ऑल्सो, दैट विल बी एनफ एज फार एज योर course curriculum is concerned. Okay, so let us begin with the first chapter. That is introduction to the environment. तो हम लोग एकदम शुरुआत का चैप्टर से शुरू करते हैं, और तुम्हारा जो पहला चैप्टर है तो उस एक इंट्रोडक्टरी चैप्टर है जिसका नाम तुम लोग लिख सकते हो कि हमारा पर्यावरण। नाउ द वर्ड एनवायरनमेंट हैज़ बीन कॉइंड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनविरॉन। which means to encircle or surround. तो एनविरॉन इज़ अ फ्रेंच वर्ड। तो ये जो शब्द एनवायरनमेंट है, जिसको हम लोग हिंदी में पर्यावरण बोलते हैं, ये एक फ़ारसी शब्द एनविरॉन से लिया जा चुका है। जिसका अर्थ है कि हमारे चारों ओर, हमारे इर्द गिर्द जो हमको घिरे हुए रहते हैं, वही है हमारा एनवायरनमेंट। सो द वर्ड एनवायरनमेंट इज़ टेकन फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड एनविरॉन. Now, what is the meaning of environment, or how do we define environment? Now, remember, environment is the sum total of all physical, chemical, and biological factors which affect the life of an organism. So, environment is defined as the sum total of all physical, chemical, and biological factors which affect the life of the organism. तो अगर हम लोग इसको हिंदी में डिफ़ाइन करने की कोशिश करेंगे तो पर्यावरण उन सभी सजीव और निर्जीव घटकों के द्वारा तैयार होते हैं जो एक प्राणी का जीवन में तरह तरह की इफ़ेक्ट्स गिराते हैं। तो एनवायरनमेंट is made up of the sum total of all physical, chemical, and biological factors which affect the life of an organism. So since we are talking of factors, now you must remember, mainly there are two kinds of factors that are present in the Earth's environment. So जब हम लोग फैक्टर या फिर जिसको हिंदी में घटक कहते हैं, ये याद रखना है कि दो तरह की घटक हमारे प्लैनेट के एनवायरनमेंट में उपस्थित है. नाउ दोज फैक्टर्स विच आर लिविंग, we call them as the biotic factors or the biotic components, and the factors which are non-living, we call them as the abiotic factors or the abiotic components. ठीक है, तो the biotic factors are the living components and the abiotic factors are the non-living components. तो जैविक घटक और अजैविक घटक. जैविक घटक मतलब जो लिविंग फैक्टर्स हैं, जो जिंदा हैं, जैसे मनुष्य, पेड़ पौधे, तरह तरह की जो अलग अलग तरीके की जो जानवर हैं, अणुजीव हैं, वो सभी हो गया आपका जैविक घटक. मतलब all kinds of living organisms, plants, animals, human beings, microorganisms, they all come under biotic factors. And whenever we are talking of your abiotic factors, और जिसको हम लोग हिंदी में अजैविक बोलते हैं, it will include the non-living factors. For example, say light, temperature, soil, atmosphere, seasons, sunlight, etc. तो अजैविक घटक मतलब जो नॉन लिविंग है, जो जिंदा नहीं है, उसका अंदर क्या क्या हो सकता है. जैसे प्रकाश हो सकते हैं, प्रकाश मतलब लाइट, वर्षण मतलब प्रेसिपिटेशन, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, वायुमंडल में जो तरह तरह की गैसेस हैं उसका जो उपस्थिति, ये सभी हो गया आपका अजैविक फैक्टर्स या फिर अजैविक घटक.
तो हमारे जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट में मेनली हम लोग दो तरह की घटक पाते हैं, एक है जैविक और दूसरा है अजैविक. सो देयर आर टू काइंड्स ऑफ फैक्टर्स which are present in the planet's environment. One is the living factor, biotic, and the other is the non-living factor, that is abiotic. Okay, now after talking about the two kinds of factors, then we shall talk about the types of environments. Then we shall talk about the types of environment. Now see, the planet's environment, we can overall divide it into two broad types. The planet's environment, we can divide it into two broad types, namely the natural environment and your man-made environment. So the planet's environment, we can divide it into two broad types, the natural environment and the man-made environment. ताले हमारे ग्रह में जो पर्यावरण है, उसको हम लोग दो प्रकार में भाग कर सकते हैं. एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण. एक है प्राकृतिक पर्यावरण और दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण. नाउ इफ वी आर टॉकिंग ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट has been created and is operated by nature. It has been created by nature and it is maintained, controlled, regulated, everything by nature, and there is no need for any kind of human interferences. For example, a forest, a desert, oceans, mountains, these are all natural environments. ताहले जो प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति ही उसका संतुलन को मेंटेन करता है. उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस या मनुष्य का कोई प्रभाव का ज़रूरी नहीं है. हाँ, फॉर एग्जांपल अगर आप वन भूमि देखेंगे, अगर आप समुंदरों को देखेंगे, अगर आप पहाड़ों में जाएंगे, तो ये सब एकदम प्राकृतिक पर्यावरण का एग्जाम्पल्स हैं, जिसमें देखा जाए तो पूरी तरह से ये प्रकृति द्वारा निर्मित है और प्रकृति द्वारा इनको रेगुलेट किया जाता है. So now we shall come down to the man-made environment. Now man-made environments are those which are created and maintained by man. Man-made environments are those which are created and maintained by man. For example, the cropland ecosystem, the aquariums in our houses, even if you think of the cities of the world, these are all man-made ecosystems where there are planned human interferences, planned human interventions, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो जब भी हम मानव निर्मित पर्यावरण के बात करेंगे तो नाम सुन के ही समझ में आ जाएगा कि वो मानव द्वारा निर्मित है और उसमें मनुष्य द्वारा कुछ इंटरफेरेंसेस किया जाता है. जैसे कि जहाँ हम लोग खेती करते हैं वहाँ हम लोग को ही पानी डालना पड़ता है, वहाँ फर्टिलाइज़र्स देना पड़ता है. अगर आप लोग एक एक्वेरियम के बारे में सोचेंगे जहाँ हम लोग मछली पालते हैं घर में, तो उसी में आप ही को टाइम टू टाइम पानी को बदलना पड़ता है, मछली को खाना खिलाना पड़ता है, जो प्राकृतिक पर्यावरण में ज़रूरी नहीं है. नदी में जो मछली है उनको कोई खाना नहीं खिलाता है, जंगल में जो जानवर है उनको कोई खाना खिलाना नहीं जाता है, वो लोग खुद से ही अपना खाने का इंतज़ाम प्रकृति से कर सकते हैं. सो दीज आर द टू मेजर टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट दैट वी कैन टॉक ऑफ. वन इज़ द नेचुरल एंड द अदर इज़ द मैन मेड एनवायरनमेंट. नाउ a very vital aspect of this man-made environment is definitely what we call as the social environment, और जिसको हम लोग हिंदी में सामाजिक पर्यावरण बोलते हैं, social environment. Now social environment is definitely a component of man-made environment which includes human traditions, human culture, our knowledge, our education, our laws, ethics, etc., etc. So remember, social environment is very much a component of man-made environment, and it includes human traditions, human culture, knowledge, ethics, laws, etc. तो ये जो सामाजिक पर्यावरण है, ये सामाजिक पर्यावरण मानव निर्मित है. और इसमें अगर हम लोग सामाजिक पर्यावरण के बारे में सोचेंगे तो उसमें हमारे जो शिक्षा, हमारा ज्ञान, हमारे जो कानून व्यवस्था, हमारे जो एथिक्स मतलब क्या सही है और क्या गलत है, इसको हम लोग उसका अंतर्गत करके उसका पढ़ाई करेंगे. सो ओवरऑल यू कैन डिवाइड द प्लैनेट्स एनवायरनमेंट इनटू नेचुरल एनवायरनमेंट एंड मैन मेड एनवायरनमेंट. Within man-made environment, you can definitely include your
what you can say, social environment. You can include your social environment. Okay. Now, after we have talked about all these things, now let us talk of the importance of environment in our life. Let us talk of the importance of environment in our life. जीवन के लिए पर्यावरण का जो महत्व है उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. Now remember, environment is the provider of all resources on this planet. Whatever resources we use from this planet, resource is anything which we obtain from the environment and using which we satisfy our day-to-day needs. The resource is anything which we obtain from the environment using which we satisfy our day-to-day needs. Now the environment is the ultimate provider of all resources: your oxygen, your food, your water, your metallic needs. So whatever resource you can think of, your energy needs, all the resources are obtained from the environment. So without environment there will be no resources. तो अगर हम पर्यावरण के महत्व के बारे में सोचेंगे, हमारे ग्रह में पर्यावरण सारे संसाधन हमको प्रोवाइड करते हैं और संसाधन के अलावा जीवन संभव नहीं है. कोई भी संसाधन अगर आप सोचिएगा, ऑक्सीजन जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन है, हमारे जो खाना, हमारा पीने का पानी, खेती करने के लिए जो फर्टाइल सॉयल, ये सभी हमको पर्यावरण से ही मिलता है. सो विदाउट एनवायरनमेंट देयर विल बी नो रिसोर्सेज and without resources nothing in this planet can exist. Even if you think of the economic systems, now every economic system is dependent on goods and services. So whenever we are talking of production, it needs or it requires resources. Now from where do we get these resources? Obviously from the environment. So अगर आप इकोनॉमिक व्यवस्था, अर्थनैतिक व्यवस्था के बारे में सोचेंगे तो कोई भी अर्थनैतिक व्यवस्था में प्रोडक्शन एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन प्रोडक्शन के लिए जो चीज़ महत्वपूर्ण है वो है संसाधन. सो संसाधन कहाँ से आएगा? पर्यावरण से. तो अगर पर्यावरण नहीं है तो संसाधन नहीं है, और संसाधन के अभाव में हम लोगों का अस्तित्व भी नहीं रहेगा. ओके, सो आफ्टर टॉकिंग अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ environment, after talking about the importance of environment, then we shall definitely talk about our subject. We shall definitely talk about our subject, that is environmental studies. We shall talk about our subject, environmental studies. So first we shall talk about the importance of environmental studies. We shall talk about importance of environmental studies, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं पर्यावरणीय अध्ययन का महत्व. ये जो एनवायरमेंटल स्टडीज़ है इसका महत्व क्या है, क्यों हम लोग कॉलेज लेवल में इसको पढ़ते हैं. नाउ सी, you must remember the subject environmental studies belongs to everyone. So all the what you can say students, whether you belong to science stream or art stream or commerce stream, whatever is your stream, you have to study environmental studies. And also it is very important that you remember you have to compulsorily pass in the subject. If you don't pass the subject, your graduation will remain incomplete, and there are 4 credits assigned to the subject. So that is the academic aspect of it. But overall, if you think of the planet's environment, the subject is gaining importance on a day-to-day basis. Now if you think of international issues like global warming, ozone depletion, acid rain, these issues are of international significance, and millions of people are getting affected because of such activities. For example, if you think of global warming and the associated climate change, if you think of global warming and the associated climate change, due to which rainfall patterns have been altered, seasons are being altered, it is affecting our cropping patterns, more and more cyclones are coming up. So this is definitely affecting the whole world. So environmental issues are not only of local significance but they are also of global significance. तो पर्यावरण के जो मुद्दे हैं वो एक अंतर्राष्ट्रीय उसका महत्व है. जैसे अगर हम लोग ग्लोबल वार्मिंग या फिर भूमंडलीय तापन के बारे में सोचेंगे तो वो एक अंतर्राष्ट्रीय इशू है. इसका अलावा ओजोन परत
की जो क्षीणता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन, या फिर क्लाइमेट चेंज जिसको हम लोग जलवायु के परिवर्तन बोलते हैं, या फिर लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी जिसको हम लोग हिंदी में जैव विविधता का हानि बोल सकते हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो जब भी हम लोग एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ेंगे, पर्यावरणीय अध्ययन करेंगे, तब भी इन सभी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के बारे में हमको मालूम चलेगा, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तरीके से प्रभाव ये गिराते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं ऐसा बोल सकेगा कि मेरा ऊपर ग्लोबल वार्मिंग का कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, हम ग्लोबल वार्मिंग का बाहर है, ऐसा कोई नहीं बोल पाएगा। Then the next thing which we can learn from studying environmental studies is that we learn about the various problems which has come up in the modern days. For example, the problems associated with industrialization, the problems of urbanization, the problems associated with the development of modern transportation systems and associated pollution, problems associated with agriculture, housing, etc., etc. So we come to learn about the modern day problems of agriculture, urbanization, modern transport systems, industrialization, etc., etc. And remember, all these names which I have taken, industrialization, urbanization, etc., they come with a whole bag of problems. So whenever we study environmental studies, we learn about these problems. तो आज का जो आधुनिक जीवन है, इस आधुनिक जीवन में काफ़ी विकास हो चुका है, लेकिन इस विकास के साथ काफ़ी समस्याओं भी उत्पन्न हो चुके हैं। हाँ, जैसे हम लोग देखेंगे कि शहरीकरण, आधुनिक जो परिवहन जो व्यवस्था प्रणाली है, आधुनिक जो कृषि प्रणाली है, आधुनिक जो हाउसिंग प्रणाली या फिर आवास प्रकल्प है, तो इन सभी आधुनिकीकरण के व्यवस्थाओं से तरह तरह की पर्यावरण की समस्याओं का व्हाट यू कैन से जनरेशन हो चुका है। तो ये सब समस्याओं के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ेंगे, और एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ही पढ़ना होगा। The third thing which we come to know when we study about the environment is that about the explosive increase in the planet's population. About the explosive increase in the planet's population. Now, the global population is more than what you can say 700 crores. It has well crossed 700 crores. The Indian population is more than 135 crores and it is increasing. Now, obviously, if you think of the global population explosion, now that is a very serious issue, because as population expands, the growing population will need more and more resources, without which the population cannot sustain itself. There will be more requirement of food, enhanced water, clean water requirement, enhanced energy requirement, and all these will lead to multiple problems like food scarcity, food insecurity, energy insecurity, job insecurity. So this will lead to shortage of living space, overcrowding of the streets, more and more social crimes will come up. So all these are the multiple problems associated with what you can say explosive increase in the global population. And you must remember that India has only around 2.4% of the world's land area, and around 16%, around 16% of the global population lives in India. Around 16% of the global population lives in India. तो पर्यावरण का अध्ययन के द्वारा हम लोग जनसंख्या में जो विस्फोटक वृद्धि हो चुका है उसके बारे में जान पाएंगे। और जैसे हम अभी बोल रहे थे कि हमारे देश का जनसंख्या 135 करोड़ से ज़्यादा हो गया है, लगभग 140 करोड़ का नज़दीक है। दुनिया का जनसंख्या तो 700 करोड़ से ज़्यादा हो गया है। दुनिया का आबादी बढ़ते जा रहा है, और बढ़ती हुई आबादी के साथ बहुत सारे प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं, जैसे खाने का समस्या, विशुद्ध पानी का समस्या, देन एनर्जी, ऊर्जा का समस्या, संसाधन का समस्या, जॉब्स की समस्या है, एडुकेशन की क्राइसिस है। तो ये सब क्राइसिस लगातार बढ़ते रहेगा,
जब तक ना दुनिया की आबादी पर हम लोग कोई लगाम लगा सके। तो ये सब समस्याओं के बारे में हम तभी जान पाएंगे जब हम लोग एनवायरनमेंट का बारे में अध्ययन करेंगे। नाउ द नेक्स्ट थिंग which environmental studies teaches us is that it tells us or talks about alternative solutions. Now, if there are problems, there will also be solutions. We must remember that. If there are problems, there will also be solutions. So, environmental studies will talk a lot about solutions. For example, if you think of the fossil fuels, coal, petrol, etc., whenever we burn them, we are causing a tremendous amount of pollution, air pollution, water pollution, oceanic pollution, etc., etc. So one of the best ways by which we can tackle such a problem is by investing more on alternative energy like solar energy, wind energy, geothermal energy, etc. So such alternative pathways to alternative solutions are provided by our subject like environmental studies. And environmental studies also talks of development, but in this case we shall be talking of sustainable development. Now, development is a way of life, and sustainable development is a form of development which takes care of the present without compromising on the ability of the future to take care of them. So the present generation must enjoy the resources in such a way so that the future generations are not hampered. So that is how environmental studies talks about sustainable development, which will enable us to survive and sustain on this planet. तो पर्यावरण का विद्या सिर्फ समस्याओं के बारे में हमको ज्ञान देती है, ऐसा नहीं है। वो हमको वैकल्पिक जो समाधान है उनके बारे में भी हमको जानकार बनाती है। जैसे हम अभी बोल रहे थे कि जो आपका विकल्प जो ऊर्जा है, जैसे सौर शक्ति, सौर ऊर्जा, वायवीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये एक बहुत महत्वपूर्ण अल्टरनेटिव है। क्योंकि आज का डेट में हम लोग देख रहे हैं कि हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स हैं, जीवाश्म जो ऊर्जा के सोर्स हैं, जैसे पेट्रोल, कोल एक्सेट्रा, वो काफ़ी महंगा हो चुका है और उसका महंगाई और बढ़ेगी दिन के दिन। लेकिन हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट्स होना चाहिए अभी अल्टरनेटिव एनर्जी में, जो वैकल्पिक व्यवस्था है उसका ऊपर। तो इसी सब वैकल्पिक व्यवस्था का ऊपर पर्यावरण के अध्ययन करने से हम लोग इन वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में जान पाएंगे। And lastly, environmental studies talks about wise planning of development. Now, development has to go on. Without development, we cannot exist on this planet. But for development, there has to be wise planning. Without proper planning, development cannot be sustainable, and unsustainable development will cause more and more problems. So, environmental studies tells us that development should go hand in hand with nature. You cannot have development by harming the nature. If you cut down all the forests of the planet, thereby procuring the wood and using the wood for variety of your day-to-day uses, then obviously the forests, which are the provider of oxygen, they won't provide you with oxygen. So that is no development at all. तो हम लोग जो विकास के बारे में बात करते हैं, तो पर्यावरण का अध्ययन के द्वारा हम लोग जान पाएंगे कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट, पर्यावरण और विकास दोनों साथ में चलना चाहिए। पर्यावरण का संपूर्ण तरीके से हानि करके आप विकास नहीं कर पाएंगे। हाँ, जैसे हम अभी बोल रहे थे कि अगर हम लोग हमारे ग्रह के सारे जंगलों को काट के उससे जो उत्पन्न लकड़ी, उस लकड़ी को काम में लगा देंगे, वो डेवलपमेंट नहीं होगा। क्योंकि अगर फॉरेस्ट चल जाएगा, फॉरेस्ट हमको ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, तो ऑक्सीजन भी नहीं मिलेगा। So this is what environmental studies constantly tells us, that development and environment must go hand in hand. वो दोनों साथ में चलना चाहिए, पर्यावरण और विकास साथ में चलना चाहिए। Now after talking about the importance of environmental studies, the next thing about which we shall talk is the multidisciplinary nature of environmental studies. The next thing about which we shall talk is the मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर, या फिर जिसको हम लोग बोल सकते हैं
बहुविषयी प्रकृति, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि बहुविषयी प्रकृति. नाउ यू मस्ट रिमेंबर that environmental studies, it has been developed in such a way so that students from all sections can go through it. It is not like environmental science. Environmental science is strictly a science based subject. There is a lot of laboratory activities included in it, but environmental studies is a subject which has been designed for all. हाँ, तो एनवायरमेंटल जो स्टडीज़ हैं, जिसको हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन कह सकते हैं, वो सभी के लिए तैयार किया गया है. वो पर्यावरण विज्ञान जैसा नहीं है, क्योंकि पर्यावरण विज्ञान एक स्ट्रिक्टली विज्ञान का ऊपर बेस्ड सब्जेक्ट है, जिसको पढ़ने के लिए आपका साइंस का बैकग्राउंड का ज़रूरत है और जिसमें काफ़ी लेबोरेटरी का काम रहता है. लेकिन एनवायरमेंटल स्टडीज़ में ऐसी बात नहीं है. जो कोई भी किसी की स्ट्रीम से हो वो एनवायरमेंटल स्टडीज़ पढ़ सकता है. तो एक चीज़ याद रखना होगा कि दिस एनवायरमेंटल स्टडीज़ विच वी आर टॉकिंग ऑफ, it is multidisciplinary in nature. It is multidisciplinary in nature, and multidisciplinary means it involves inputs from various subjects. So whenever we are talking of multidisciplinary nature, that means environmental studies involves inputs, knowledge from various subjects from all streams of mathematics, physics, chemistry, zoology, botany, etc. Subjects from what you can say commerce streams like economics. You can study about environmental economics separately. It involves law. Environmental laws are there in India. That it involves studies from the arts background, from the humanities background, for example environmental ethics. So all these things are included in your environmental studies, and that is why we say that environmental studies is a multidisciplinary nature. तो पर्यावरणीय जो अध्ययन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये बहुविषयी प्रकृति है इसका. क्यों? क्योंकि पर्यावरण अध्ययन सभी कर सकते हैं. मतलब सब्जेक्ट को ऐसा तरीके से बनाया गया है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स अलग अलग विषयों से, जैसे गणित, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी मतलब एनिमल साइंस, बॉटनी मतलब यू स्टडी अबाउट प्लांट्स. तरह तरह की विषयों से कुछ ज्ञान को जोड़ के पर्यावरण की विद्या को हम लोग पढ़ेंगे. तो इसमें याद रखना होगा कि जैसे इसमें साइंस का विषयों का इनपुट्स है, इसमें कॉमर्स का भी इनपुट्स है. जैसे एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स, पर्यावरण और अर्थनीति दोनों को साथ में चलना होगा. अगर हम लोग सिर्फ पर्यावरण के बारे में सोचेंगे और अर्थनैतिक विकास के ऊपर नज़र नहीं डालेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा. और दूसरे तरीके से अगर हम लोग सिर्फ अर्थनैतिक विकास के बारे में सोचेंगे और पर्यावरण पर कोई महत्व नहीं लगाएंगे, उसमें भी फ़ायदा नहीं होगा. और फिर अगर हम सोचेंगे कि पर्यावरण के रक्षा के लिए, पर्यावरण के प्रोटेक्शन के लिए तरह तरह की कानून हमारे देश में है, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे. तो मतलब लॉ, ह्यूमैनिटीज़, आर्ट्स, साइंस, फ्रॉम वेरियस स्ट्रीम्स, तरह तरह की विषयों को एकजुट करके हम लोग पर्यावरण विद्या को तैयार किए हैं. सो बिकॉज दिस सब्जेक्ट comprises ऑफ knowledge inputs, factual inputs, statistical inputs from various disciplines. That is why we say that environmental studies is a multidisciplinary subject. क्योंकि तरह तरह की विषयों के बारे में हम लोग तरह तरह विषयों के ज्ञान को एकजुट करके पर्यावरण विद्या को तैयार किया गया है. इसीलिए हम लोग पर्यावरणीय अध्ययन को एक बहुविषयी विषय कहेंगे. We will be calling it as a multidisciplinary subject. So with that we come to the end of the first chapter. That is introduction to the environment. हिंदी में आप लोग सोच सकते हैं कि ये हमारा पर्यावरण के बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो चुका है. तो अगला क्लास में हम लोग इसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे. सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में हम लोग थोड़ा डिस्कशन करेंगे और हमारे प्लैनेट्स का जो तरह तरह की स्फीयर्स हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, उस सब के बारे में हम लोग थोड़ा जानेंगे.
और फिर हम लोग विल मूव इनटू रिसोर्सेज। अच्छा, और एक चीज़ हम बोल देते हैं कि today's class I'll be uploading in my YouTube channel. I have a YouTube channel. I am providing with the name of that YouTube channel. So subscribe to that YouTube channel. Even if you miss the class, you can listen to the lecture on the YouTube channel. ठीक है, I'm writing down the name of the YouTube channel. Just a second. Basics. सर YouTube चैनल का लिंक आप ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। आज हम ग्रुप में हम अभी चैट में भी दे देते हैं। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट बाय सायंतन दत्ता। ठीक है, ये है चैनल का नाम और हम लिंक भी अभी दे देते हैं, तुम लोग सब्सक्राइब कर लो। अगर क्लास मिस हो जाता है तो इसी से तुम लोग क्लास कर लोगे, क्योंकि ऑनलाइन क्लास बहुत जन नहीं करता है। हम अभी लिंक दे देते हैं। एक सेकंड, हम अभी लिंक दे देते हैं। सर ग्रुप में तो अभी ज़्यादा बच्चे ऐड नहीं है, ज़्यादा स्टूडेंट ऐड नहीं है, तो ये आप व्हाट्सएप ग्रुप में ही सेंड कर दिए तो उससे क्या होगा, सब ऐड हो जाएगा। अच्छा ठीक है, ठीक है, हम दे देते हैं अभी। एक सेकंड। एक्चुअली एनवायरनमेंट का अलग से तो ग्रुप नहीं है ना, वही तो प्रॉब्लम है। मतलब तुम लोग देखो, हम लिंक दे दिए हैं, तो इस लिंक को कॉपी करके तुम लोग अपना ग्रुप में शेयर कर लो, ठीक है। और हम आज का क्लास का जो क्लास हम ले चुके हैं उसका वीडियो अभी अपलोड कर देंगे और नोट्स भी हम तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। डोंट वरी, पर्टिकुलरली हिंदी शिफ्ट स्टूडेंट्स, तुम लोगों को बुक का थोड़ा प्रॉब्लम होता है, सो हम नोट्स तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। और जितना हो सके हम कोशिश करते हैं हिंदी में बोलने के लिए। मेरा हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, बट स्टिल आई एम ट्राइंग। ठीक है, ठीक है, ओके देन। फिर हम लोग अगला क्लास में फिर मुलाकात करेंगे और हम इस वीडियो को अभी अपलोड कर देते हैं। तुम लोग चैनल का जो लिंक हम दे दिए वो ग्रुप में शेयर कर दो और बोल दो ना कि जो क्लास नहीं किया वो आज का क्लास का वीडियो देख ले सर, अभी अपना यूट्यूब चैनल में अपलोड कर देंगे। हम आज का डेट और क्लास का टॉपिक लिख के अपलोड कर देते हैं। हाँ ठीक है, ओके सर, ओके, बाय 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 सर। बाय।